CAIE, equilibrium constant, right? So I'm going to talk about equilibrium constant today. What are the basic steps to find the equilibrium constant CAIE, how to write the expression of CAIE, and how to find the value of CAIE. CAIE mean equilibrium constant. KC. This capital K is equilibrium constant. And this C mean with respect to or in term of concentration. So Kc is the equilibrium constant in term of concentration with respect to concentration. And you know what is a concentration? Concentration is basically expressed by these brackets, square brackets, and concentration is the quantity in moles per 1 dm cube. So the mole per 1 dm cube quantity is said to be the concentration, and symbolically we can express the concentration by these square brackets. First of all, how to write the expression of Kc and what is the Kc basically. For example, I'm going to write a hypothetical equation, experiment. N2, 3H2 goes to, there's a reversible reaction, to NH3. Number one, Kc is applicable only for or on reversible reactions. Kc is not applicable for irreversible reactions. If the reaction is moving in two directions, in forward as well as reverse direction, then these reactions are said to be reversible reaction. And a stage is going to come, or that is going to establish meanwhile the course of a reaction, that is said to be dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium means when the speed of forward reaction is equal to the speed of backward reaction, that stage is said to be dynamic equilibrium. When the dynamic equilibrium is established, after that you can check the quantity of the product that has been made and the quantity of that has been decreased. Definitely, whenever you are going to start a reaction, definitely there is decrease in the concentration, decrease in the mass, decrease in the mole of the reactant, and increase in the concentration, increase in the mass of products. With the passage of time, जो ही हम reaction शुरू करते हैं, initially reactants are in maximum quantity, but with the passage of time they start decreasing. Why they start decreasing? Because they are going to change into the products. They are going to born a new compound. So a new compound that is supposed to be born is going to increase its concentration, its mass, its volume, its mole, and so on. So मेरे पास एक equation है that is said to be Haber process, and I am going to write its expression of Kc. Kc is a ratio, and I'm going to mark a line, a ratio basically. The species present on the right hand side. This equation is a typical equation, and we are going to take the forward equation or forward reaction. आपने जब भी Kc लिखना है, आपने forward equation को देखना है, forward reaction को suppose करना है. You are going to suppose that there is only one reaction happening, forward reaction. Forward reaction चल रहा है, बस. For example, so these species are said to be the species present on the right hand side, as my right hand side is lying over here, or that is the side of my right hand, and other side is of my left hand, so that is said to be left hand side. तो हर reaction की दो sides होती हैं, right hand side, left hand side, हर equation की या reaction की. So in case of Kc, how to write the expression of Kc? The species present on the right hand side are taken over here in numerator. Species present on the left hand side are taken in denominator. And the next step is mole of these species are raised to their powers. यहाँ पे 2 था, मैंने यहाँ 2 लिख दिया. Here there are the 2 species present on the left hand side, so I am going to write 2 species on the left hand side. One is having 1 mole
So one reactant, I mean nitrogen is going to have its power 1 of its concentration, and hydrogen is going to have power 3 of its concentration. ये मैंने जर्नल लिखा है. I mean, what is the Kc? Kc is the ratio of the product to the reactants. Moreover, it is a ratio of the species present on the right hand side of the equation to the ratio, I mean, of the species present on the left hand side. The next thing is you will make the powers with respect to the equations, mole of equations. जो इक्वेशन के अंदर मोल्स हैं, दे विल बी पावर ऑफ दीज कंसंट्रेशंस, दीज स्पीशीज, इनकी आप पावर बना देंगे. दिस होल एक्सप्रेशन इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. आई मीन इट इज नोन एज KC. इट इज सेड टू बी KC. क्या हो गया है इसको? This is a general expression of Kc. Now I am going to write the specific expression. Kc is equal to which one species is present on the right hand side? It's ammonia, NH3, bracket close, raised to power 2, it's moles. जो मोल में लिखा हुआ है वही आपने उसकी पावर्स बना देनी. Divided by one reactant is nitrogen, raised to power its mole 1. Multiply. This is not the addition. This is the common mistake. Sometimes students mark addition over here. No, it's not addition. It's multiplication. H2 raised to power 3 cube and so on. So this is the true expression, exact expression of this Haber process. So what is Kc? Kc is the concentration of the species present on the right hand side to the concentration of the species present on the left hand side with the powers, those are in form of mole in their equation. This is called expression of Kc. Got it? Yes sir, but how will we calculate it? वो उसके बाद में हम we will mark the different steps later on. अभी नहीं, मार्क करेंगे बाद, आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड. बट अभी फर्स्ट हमने यही सीखा है हाउ टू मेक द एक्सप्रेशन, हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kc. अभी हम उसी पे ही थोड़ा सा फोकस करने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू राइट अनदर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल H2, इट्स अ गैस, half mole of oxygen, it's also a gas, and I'm going to make water, and let's suppose it's a gas. अभी लिक्विड नहीं लिख रहा हूँ, उसमें एक रोला है, एक फड्डा है, क्या है बाद में बताऊंगा. Once again, you are supposed to write the expression of Kc. What will be the expression of Kc for this said reaction? बताइए please. Sir, it will be H2O over Bracket, yes, good. H2O. yes, bracket H2 bracket multiply by O2 into to power of 1 over 2. Shabash. Absolutely right. This is exactly the true expression, accurate expression for this given equation. So आपने जो equation आपको given होगी उसी के हिसाब से with respect to that equation you are supposed to write the expression. But in case of whenever you are going to write Kc, now there are सर इसकी जगह हम स्क्वायर रूट नहीं लिख दें O2 की जगह? वैसे यस आप लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है, बट केमिस्ट्री में कभी देखा नहीं है. लिखा तो वैसे जा सकता है, दैट इज इक्वल टू हाफ. यस हाफ, अगर किसी की पावर हाफ हो तो उसका स्क्वायर रूट, यस इट इज ट्रू, बिल्कुल लिख सकते हैं आप. एग्जैक्टली, यस, कंफर्म. नाउ Kc में यूजुअली इन Kc नो solid is taken, or no solid is counted, no solid is considered in as the part of Kc. Same is the case, no pure liquid, no pure solid is going to be counted as the part in Kc. But there is one exception, except water. उसकी भी कुछ conditions हैं. Except water, H2O liquid. अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने पानी कब काउंट करना है.
whenever you are supposed to count water molecule, it's a liquid, it's a pure substance, liquid substance. बाकी जितने भी प्योर लिक्विड्स हैं, लाइक मरकरी, लाइक गैलियम, आई मीन कोई भी प्योर एलिमेंट हो, कोई सॉलिड एलिमेंट हो, इट्स नॉट टेकन एज द पार्ट ऑफ केसी, उसको हम नहीं लेते. लेकिन पानी को आपने कब काउंट करना है या काउंट नहीं करना है, एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है. नंबर वन, स्टेप नंबर वन, वेन एवर एनी एक्वस कंपाउंड इज गोइंग टू मेक वाटर, फॉर एग्जाम्पल एक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, और ये ऑर्गेनिक अल्कोहल है, दे आर गोइंग टू मेक वाटर एंड एस्टर. सो अगर ये आप एक्वस यूज कर रहे हैं, then you are already taking reactant in form of aqueous, so you are not allowed to take water. आप यहाँ पर पानी काउंट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर वाटर इंक्लूड नहीं करेंगे. यानी if your reactants are in aqueous state, if your reactants are in aqueous state, you will not count, you will not take the water as a part of KC. अगर नहीं काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे उसकी जगह पे, उसकी जगह पे 1 लिखेंगे जी. अगर इफ द टू एक्वस स्पीशीज आर मिक्सिंग टुगेदर, कोई भी दो चीजें जो एक्वस हैं, जिनका स्टेट सिंबल एक्वस लिखा हुआ है, एंड दे आर मीटिंग टुगेदर टू मेक वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे आर गोइंग टू यील्ड वाटर, वो पानी बना रही हैं, तो आपने उस केस में पानी इंक्लूड नहीं करना. एक लॉजिक है, ऑलरेडी एक्वस हैं, ऑलरेडी इतना पानी है, अगर उन्होंने थोड़ा सा पानी बना दिया है तो इट विल मेक नो डिफरेंस, इट विल मेक नो डिफरेंस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. तो पानी की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट विल रिमेन सेम, विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन अनचेंज, तो वो चेंज नहीं होगी. तो अगर आपके रिएक्टेंट एक्वस हैं, देन यू विल नॉट काउंट द वाटर, आप फिर वाटर काउंट नहीं करेंगे. राइट, गॉट इट? जी सर, so it has to be pure. अगर वाटर एक्वस चीजें नहीं बना रही हैं, कोई और बना रहा है, तो फिर आप काउंट करेंगे. मैं आगे चल के आपको एग्जांपल देता हूँ. अच्छा ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट थिंग इज, आई मीन इफ फॉर एग्जांपल वाटर इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, then it will be counted. So in this case, what is going to behave as a reactant? Main reactant है, पानी है, less quantity में है, it is not aqueous. Aqueous mean कि that is the major player is not water, जो हमने उसमें dissolve किया हुआ है, that is playing the chemical role. तो उस वक्त पानी just एक that is going to behave as a solvent, वो aqueous होता है. अगर यहाँ पानी लिखा हो तो मैंने टिक लगाया है, you will count water in KC, KP, not in KP, sorry, KC. फिर आप, even though it's a liquid, but it will be counted, it will be the part of your KC. तो मैंने पहली चीज बताई है कि अगर आप पानी बन रहा है, if it is present on the right hand side, but it is being formed from the aqueous medium, then it will not be counted. Next thing, दूसरा rule, if the water is present on the other side, I mean if it is present on the left hand side, it will definitely be counted. इसको काउंट करना पड़ेगा. तो राइट साइड पे काउंट नहीं करना, लेफ्ट साइड पे काउंट करना है. और राइट साइड पे स्पेशली कब काउंट नहीं करना, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्वस मीडियम. अब मैं एक दफा फिर इक्वेशन लिख रहा हूं ऊपर वाली, यहां पर गौर से देखें. फॉर एग्जाम्पल H2 इट्स अ गैस, half oxygen is a gas, and equilibrium has been achieved, and H2O is a liquid. Now I am going to write the expression of Kc. Will I count this water? Kc is equal to, is there aqueous medium on the left hand side, on the right hand side? आपका ये मतलब है सर, H2 जो उसकी स्टेट होगी वो एक्वस होनी चाहिए? जी, एक्वस होती, स्टेट ही एक्वस होती है. अच्छा, तो सर इट विल नॉट बी. अगर एक्वस होगा, इट्स इधर गैस. होगा, हाँ, इस गैस, एक्वस नहीं है, सो इट विल बी काउंटेड. H2O, और नीचे लिखेंगे H2 गैस मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन
रेज टू पावर हाफ. अगर एक्वस होंगे तब काउंट नहीं करना पानी आपने. If the left hand side species are in aqueous medium, you will not count water. If they are not aqueous, you will count water. If water is present on the left hand side, definitely it will be counted. Got it? जी सर. तो अब फर्दर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, होपफुली आपको समझ आ जाएगी. नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ. आई मीन यहाँ तक कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, के सी, expression of KC, and especially no solid is included in KC, no pure liquid. Sometime water is included. When it is included, if it is not being formed from the aqueous, अगर पानी aqueous से नहीं बन रहा फिर काउंट करेंगे, और अगर पानी लेफ्ट साइड पर है फिर भी काउंट करेंगे. अगर aqueous से पानी बन रहा है फिर काउंट नहीं करेंगे. Now come toward the next step. How to make the units of KC. Let's see over here. मैंने expression लिखा है पहले वाला, this one. So how to find its units? सबसे पहले आपने just you will count the brackets in numerator, in denominator. How many brackets are lying in numerator? Sir, one pair of bracket. I mean ब्रैकेट्स तो क्या, 2 ब्रैकेट्स, राइट? जी. मैं इसको यूं लिख सकता हूँ. जी जी सर. इन डिनोमिनेटर 4 ब्रैकेट्स आर ओवर हियर. जी, 4 pairs of brackets. गुड. सो 2 ब्रैकेट्स विल बी कैंसल आउट. व्हाट इज रिमेनिंग? आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर. So there's only one bracket remaining. 2 ब्रैकेट्स, 1 ओवर ब्रैकेट स्क्वायर. यही बाकी बच गया यहां से. जी. 1 ब्रैकेट इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब. 1 ओवर, कैन आई राइट इट लाइक दैट? जी, you can, I think. Okay. जी जी. Now, what is the next and simplified form? जगह थोड़ी सी कम है मेरे पास. So I can write it like that. 1 divided by mole square over dm 6. ऐसे लिख सकता हूँ मैं. 1 divided by mole. Yes sir. सर आपने वो ब्रैकेट में रह क्या गया था? जी. H2 रह गया था ना? नहीं, जस्ट ब्रैकेट काउंट करनी है हमने. इसमें अच्छा. कोई स्पीशीज ऐड नहीं करनी है. अच्छा वी आर अच्छा, जस्ट ठीक है. काउंटिंग द ब्रैकेट्स. अच्छा ठीक है सर. यूनिट्स के लिए सिर्फ ब्रैकेट्स. गॉट इट? जी. अब आपने, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, I want to change this sign into multiplication, then definitely I will write dm 6 over mole square. सॉरी सर. जी सर, सही है. ठीक है. And these are your units. Anything multiplied by 1 mean that thing. So dm6 over mole square is the final unit of this Kc, expression of this Kc. Come towards another example. This one जो मैंने अभी ऊपर लिखी है, दोबारा लिख रहा हूँ मैं इस यहाँ पे. H2 plus half O2 goes to H2O. It's a liquid, it's a gas, it's a gas. So Kc is equal to H2O concentration divided by H2 concentration multiplied by oxygen concentration raised to power half. Now the next turn to find its units. Sometime no units का आंसर भी हो सकता है, लेकिन अभी हम देखते हैं. How many brackets are in numerator? So there's 1 unit. Then and here is 1.5 you can say. 1 will be cancelled out. एक एक से कट गया. The remaining is 1 divided by bracket raised to power half. Got it? जी सर. So 1 multiplied by
या अभी नहीं मल्टीप्लाई बाय, आई मीन यू नो कि शायद समझ ना आए आपको, मोल रेज टू पावर हाफ एंड dm3/2 लिख सकता हूँ अगर ब्रैकेट को मैंने ओपन कर जी सकता सर। हूँ, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय dm3/2 डिवाइड बाय 3/2, मोल 1/2 सर। this bracket is equal to 1/2 mole राइट। mole per अच्छा, dm DM क्यूब। cube अच्छा, raised ओके। to power half. अच्छा सर, ठीक है। ठीक हो गया? So जी। this is the final unit for this reaction. Come towards another example. H2 plus I2 goes to 2HI. It's a gas. Let's suppose it's also gas. It is obviously a gas. So gas is counted in KC. Aqueous is counted in KC. Yes, gases and aqueous both are counted. So come toward this one. What is first of all? What is the expression of KC? KC is equal to HI concentration divided by H2 concentration multiplied by I2 concentration. क्या मैंने एक्सप्रेशन कंप्लीट लिख लिया, ठीक लिखा है, या कुछ मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा? सर आपने उसका स्क्वायर नहीं लगाया HI गुड का। गुड बॉय, शाबाश. That is a true expression of this reaction. This is the true expression of Kc. Come towards units. दो brackets ऊपर and two brackets are lying in denominator. Both will be cancelled out. No unit in this case. And boom. So this is the pattern to write the expression of Kc and to find the units of Kc. Got it? जी सर, एक सेंट के लिए ऊपर करना। ओके, ठीक है सर। Alright. कोई भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, उसका रिएक्शन खुद से बना सकते हैं, तो बना चेक कर सकते हैं एंड सो ऑन. Now come towards how to calculate the Kc. अच्छा। अभी आपने वो और स्टेप जी नोट सर, नोट ये किया. हम क्या कर रहे थे? ये हम यूनिट ढूंढ रहे थे। अभी हम एक्सप्रेशन लिख रहे थे, यूनिट ढूंढ रहे थे. अच्छा। हमने आंसर नहीं फाइंड किया Kc का, कहीं पर भी कोई डिजिटल कोई नंबर नहीं उसका फाइंड किया, राइट? जी सर। ओके. सो नंबर 1, इसके स्टेप्स याद करने हैं. स्टेप नंबर वन यह है कि आपने यू विल राइट द मोल्स. दीज आर कॉल्ड इनिशियल मोल्स. इनिशियल मोल लिखेंगे आप ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज प्रेजेंट in the mixture. Step number 2, after some time, after time, let's suppose t, कुछ time के बाद, that is not specified, I at the stage of dynamic equilibrium. कुछ देर के बाद जब आपने उन चीज़ों के मोल को मिक्स कर दिया है, and now the second stage is when the dynamic equilibrium has been achieved. At the stage of dynamic equilibrium आप एक और एक्सप्रेशन लिखेंगे. स्टेप 3 है, you will find, you will change your answer into mole per dm cube. तमाम जितनी भी स्पीशीज हैं आपने उनका आंसर मोल पर dm क्यूब में तब्दील कर लेना है. स्टेप नंबर 4, you will find the Kc. Finally, you will put this value into the Kc and we will find the answer of Kc. So basically there are 4 major steps. अब मैं एक एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ. H2 plus I2 goes to HI. For example, you are
going to deal or you are going to use hydrogen, 2 mole of hydrogen, and you are going to mix it with same 2 mole of iodine. आपने एक डब्बे के अंदर एक कंटेनर में 2 मोल हाइड्रोजन ले लिया और 2 मोल आपने आयोडीन ले लिया, उन दोनों को मिक्स कर दिया, एंड यू आर सपोज टू हैव सील्ड कंटेनर. Initially, as you know, at the very beginning, there is no HI present in the container. अभी हमने कोई HI ऐड नहीं किया है और अभी वो बना भी नहीं है. Initially, we are using hydrogen and iodine. 2 mole hydrogen, 2 mole iodine, we are going to mix them and we are waiting for the dynamic equilibrium. Now, let's suppose after many hours, after many even days, let's suppose there is the dynamic equilibrium reaches over here. So, you will write 2 minus 1y. That is the important point. 2 minus 1y. Next thing, 2 minus 1y goes to 0 plus 2y. मैंने हाइड्रोजन से कुछ माइनस किया है. लेट्स सपोज जो भी चीज जितने भी मोल माइनस हो रहे हैं मैंने उसको y कहा है. क्या हाइड्रोजन माइनस होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम या नहीं, ये क्वेश्चन है बेसिकली. कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होगा तो H2 खत्म हो गया ना. अच्छा I2 ठीक कुछ I2 भी खत्म हो गया. H2 और I2 दोनों बेसिकली मिले. H2 नहीं रहा, I2 नहीं रहा. They are supposed to meet to make a new compound, and that compound is HI. तो इनकी रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होगी या नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है बेसिकली. कम होएगी. होगी. अब वो किस रेशो से कम होगी, वो इस रेशो से कम होगी. यहाँ 1 है तो इट विल बी विद रिस्पेक्ट और मल्टीपल ऑफ 1 मोल. जितने भी मोल कम होंगे दोनों से वो इनके मोल रेशो के हिसाब से कम होंगे. अगर इनकी मोल रेशो सेम है तो दोनों में से 1 मोल के हिसाब से कम हो जाएंगे. जितना भी फैक्टर कम होगा, हाफ मोल, 1 मोल, ऑल मोल्स, जितने भी कम हो रहे हैं, दे विल बी अकॉर्डिंग टू देयर मोल रेशो. इनिशियली देयर वाज नो HI इन द मिक्सचर, इन द रिएक्शन मिक्सचर. अब HI बन रहा है. अगर इस Y को देखा जाए, जिस रेशो से आयोडीन और हाइड्रोजन कम हो रहे हैं उससे डबल रेशो में HI is supposed to be formed. इक्वेशन ये बता रही है कि HI और H2 और आयोडीन दोनों हाफ रेशो में है, 1 रेशो में है, एज कंपेयर टू द रेशो ऑफ HI, दैट इज 2 डबल इन रेशो. तो ये दोनों 1 मोल कम होंगी तो HI के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बन जाएंगे. इसका मतलब ये है, यानी अगर 1y यहां से कम करूं, 1y यहां से कम करूं तो कितने YHI बनेगा. लेट्स सपोज y कम हो रहा है, y इज अननोन क्वांटिटी, इट्स अ वेरिएबल, आई मीन स्टिल नॉट नोन. तो अगर इनका 1 मोल कम होता है दोनों का, तो उधर जो चीज बन रही है उसके डबल मोल बनेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टिचियोमेट्रिक रेशियो ऑफ दिस इक्वेशन. ये हमें इक्वेशन बता रही है. तो हमने अभी तक उसको एक्सपोज्ड वैल्यू की फॉर्म में लिखा है. आपने भी ऐसा करना है. एंड दिस इज द मेन स्टेप. सबसे ज़्यादा गलती आप यहाँ करते हैं, आप से मुराद स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं. अगर ये आपने ठीक कर लिया है, ये एक्सप्रेशन ठीक लिखा है, उसके बाद इसका आंसर मालूम करना होता है. अगर आपने ठीक मालूम कर लिया है, फाइनली गुड, आपका आंसर ठीक होगा, अदरवाइज यू मे बी इन ट्रबल. नाउ कम टूवर्ड्स हाउ टू फाइंड y. अब y चाहिए, y का आंसर नहीं होगा तो हम आगे नहीं चल सकते. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एग्जामिन्ड, आपने उस कंटेनर को खोल के देखा है, एंड अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन द कंसंट्रेशन ऑफ HI, or not concentration, sorry, mole of HI moles is equal to 2. अगर मैं लेट्स सपोज ये गिवन होगा, आपको एग्जामिनर आपको बताएगा, ऐसे नहीं है अननोन, खुद से आपने खुद से सपोज करना है, ना ही ये बिल्कुल अननोन होगा.
उसने बोला है कि जब हमने इस स्टेज के ऊपर व्हेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट दिस स्टेज 2 मोल ऑफ HI इज प्रेजेंट एट द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. मैंने उसको नंबर नहीं दिया था, मैंने उसको y की टर्म में लिखा था. आई कॉल्ड इट 2y. एग्जामिनर ने मुझे उसका आंसर बोल दिया है दैट इज इक्वल टू 2. सो फ्रॉम दिस आंसर आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. So 2y will be equal to 2 and y will be equal to 1. Now I have calculated the answer of y. जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट करते जाना है. अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे सो यू आर गोइंग टू हैव द मोल. अब आपके पास आंसर आ रहा है, वेरिएबल्स ख़त्म हो रहे हैं. 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, कॉमा कॉमा लगाना है, प्लस नहीं लगाना. Again 2 minus 1y, I mean y की जगह 1 तो 1 goes to that is equal to 2. So remaining amount of hydrogen is 1 mole in the container. Remaining amount of iodine is 1 mole in the container and 2 mole HI has been made. तो अब हमारे पास exact answers आ गए हैं, known values आ गई हैं and these are called moles. These are called moles. ये सारे moles हैं. Next step is to change into mole per dm cube. तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम आपको गिवन होगा. Let's suppose this container is having 0.5 dm cube volume. जिसके अंदर ये गैसेस फिर रही हैं उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम 0.5 dm cube है. तो आपने जो भी आपके पास आंसर आया है उसको आपने dm क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है. ईच एंड एवरी वन विल बी डिवाइड बाय 0.5, दैट इज द होल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. लेकिन आपने जो आंसर अगर dm क्यूब में नहीं है तो उसको dm क्यूब में कन्वर्ट करना है. आपने तमाम आंसर्स को dm क्यूब यानी जो भी टोटल वॉल्यूम है द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन dm क्यूब, नॉट इन cm क्यूब, इन dm क्यूब आपने उससे डिवाइड कर देना है. अब गौर से देखें sorry, finally I'm going to have this answer is equal to 2, it is also equal to 2, it's equal to 4. So मेरे पास आंसर आ गया कि हाइड्रोजन is equal to 2 mole per dm cube, iodine is equal to 2 mole per dm cube and HI is equal to 4 mole per dm cube. Now I am going to write the expression of Kc. You know what is the expression of Kc? Kc is equal to, आपने पहले लिखा है हमने इसको, HI raised to power 2 divided by H2 multiply by I2 and H2 का आंसर कितना है 4 है, 4 raised to power 2 divided by H2 कितनी बाकी बच गई है 2 multiply by iodine कितनी बच गई है 2 multiply by. So overall we are going to have 16. So the answer is Kc is equal to 4. ये है हमारे पास बेसिक स्टेप्स टू कैलकुलेट Kc. ये इजी हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी और बुक में ये y का तरीका और लिखा हो. आपने हमेशा यही y यूज करना है, माइनस भी y करना है, जिधर ऐड करना है. सही आपकी बुक में है? जी है मेरी बुक में. कम टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जांपल, नॉट मोर मच डिफिकल्ट. Once again I'm going to write hydrogen but with half mole oxygen goes to H2O and I'm taking gas, all gases. Initially I'm taking 2 mole of hydrogen, I'm taking 3 mole of oxygen, I'm mixing them in a container and obviously initially there is no water vapor present in the mixture. अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ. एक बॉक्स के अंदर एक कंटेनर में इसके 2 मोल्स हैं, आई एम हैविंग 2 मोल्स हाइड्रोजन एंड 3 मोल्स ऑक्सीजन एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मिक्स देम आउट. मिक्स कर रहा हूँ ताकि ये पानी बनाना शुरू कर दें. इनको मैंने मिक्स कर दिया, लेट इट बी लाइक दैट कि कुछ देर के लिए इनको मैंने छोड़ दिया. आई लेफ्ट इट फॉर डेज आवर्स वीक्स यू कैन से. मुझे जब इंश्योर हो गया कि देयर इज द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम,
इन दोनों की स्पीड बराबर हो गई है, इक्विलिब्रियम आ गया है, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू राइट द न्यू एक्सप्रेशन एट द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. टू माइनस करूंगा या प्लस करूंगा, ये आप बताएंगे मुझे. सर 2 माइनस होगा ये. माइनस, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में रिएक्शन फॉरवर्ड को माइनस जा रहा होगा. है. ऑब्वियसली ये तो कुछ भी नहीं था, तो रिएक्शन की जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है ऑब्वियसली दे आर चेंजिंग देमसेल्फ, तो ये रिएक्शन माइनस होगा. 2 माइनस वाई कॉमा 3, इसमें में से भी माइनस करेंगे. कितने वाई माइनस करूं वाई सर. तीन. विद रिस्पेक्ट टू अच्छा. मोल? हाफ. सो हाफ वाई. Half y, good. So as water has been made, initially it was 0. How many y have been added to this 0? Y. 1 y, यहाँ पर 1 है, तो मैं 1 y करूँगा. अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल. सर 1 किधर? अच्छा 1 ऊपर है तो 1 वाई वहीं से करोगे. जी, यहाँ से भी 1 y, ये 1, हाफ हाफ 1 1. Let the moles of H2O is equal to 1 at equilibrium stage. एक मोल है पानी का, so it means that y is equal to 1. जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें. What is your next answer? Please let me know. बल्कि मैं इससे कलर चेंज कर रहा हूँ जी. यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 2 माइनस 2 माइनस 1. 1 आ सो गया. 1. So what is answer over 3 here? माइनस 5 2.5 सर. Good boy, 2.5 exactly, and it is obviously equal to 1. So these are called moles at equilibrium. These are called moles at equilibrium. Now the next thing is to change these mole into the dm cube, into concentration. For example, the whole container is having, for example, its volume is 250 centimeter cube. It VT, total volume. So how to change So this? divide by 250. No, we will not divide by 250. We will divide by dm cube. ये centimeter cube है. 250 is equal to how much dm cube? Times 10 to power minus 6. No man, क्या होगा? Minus 3, sorry. Yes. तो क्या आएगा इसका आंसर आएगा? You can check it from your calculator. जी sir. 250 times 10 to power minus 3. 0.25. 0.25. So every one mole will be divided by 0.25. 0.25. What is the answer of this one? It will be equal to 4. Right? Yes. Yes. And what about this one? I think we equal to 10. 10. 10 mole per dm cube, and its answer will be again 4. So this 4 is now mole over dm cube. This 10 is, yes, it is again mole over dm cube. This 4 is again mole over dm cube. तो मोल पर डीएम क्यूब को ही हम पुट करते हैं केसी के अंदर, उससे पहले कोई नंबर पुट नहीं कर सकते. Now finally we have calculated our desired answer, that is a mole per dm cube. Now the last thing is write the expression of Kc. You know what is the expression of Kc? Concentration of water H2O divided by H2 multiplied by O2, and this raised to power half. Please help me out to put these values in this expression. So sir, for first one up ऊपर वाला 4. 4, good. Then 4 times 10. 4 times 10 to power 1 over 2. Shabash, good boy. And finally, what is the answer? 1 over 10 raised 10 to to power power 1 over 2. minus 2, and calculator से जरा check कर लें इसको, what is the final जी. answer? 1 over 1 over 2
2, it's 3.16 3.16. And what are its units, man? mole cube. नो, क्योंकि एक ब्रैकेट ऊपर है, Oh, एक ब्रैकेट sorry. नीचे कट गई. There is one bracket with half power left behind. So what So will mole be to its... power 1 over 2 over 3 over So, d over 2. Shabbat, dm 3 by 2 divided by mole 1 by 2. These are the unit of this expression, this reaction, and so on. मैंने यहाँ पर जो चीज़ें सपोज की हैं, दो सपोज की हैं. एक तो y को खुद से सपोज कर लिया है और वॉल्यूम खुद से सपोज किया है. बट इन योर, आई मीन, एग्जामिनेशन, इन योर क्वेश्चंस, दिस ऑल थिंग्स विल बी गिवन टू यू. आपने बस ये देखना है. हो सकता है कि आपको कभी रिएक्टेंट गिवन हो, कभी प्रोडक्ट गिवन हो, लेकिन जो भी गिवन होगा, इट विल हेल्प यू आउट टू फाइंड द आंसर ऑफ वाई. आपको वाई कहीं ना कहीं लाजमी गिवन होगा. अगर वाई गिवन नहीं है तो फिर फाइनली इस केसी का आंसर गिवन होगा. याद रखें, या तो वाई गिवन होगा, अगर वाई गिवन नहीं है तो फिर केसी का आंसर गिवन होगा. आपने वापस जाके वाई सर्च करना होगा, वाई फाइंड करना होगा. If the y is given, then you are supposed to find the kc. If the kc is given, you are going to supposed to find the value of y. तो अगर आप y किसी भी और हिंट से, किसी और स्टाइल से, किसी भी और डाटा से निकाल सकते हैं, तो y निकालें, उसको पुट करें, और उसको मोल्स बन जाएंगे. मोल्स को कन्वर्ट करें मोल पर डीएम क्यूब में, आई मीन डिवाइड कर दें. डीएम क्यूब कंटेनर का जो आपका ओवरऑल वॉल्यूम है, बट इट मस्ट बी इन डीएम क्यूब. Finally, you are going to have the concentrations answer, and then you will put this concentration answer into the expression, and you are going to have finally the final KC answer. Next thing, important thing is this one. You should be able to make, mark, calculate, find the answer of unit of that expression of that KC.